easiest one to crack the in the exam hall. इससे easy कोई और सब्जेक्ट नहीं है. Okay, believe me. Okay, ट्रीटमेंट सेम है हर फ्रैक्चर्स की, बदलती नहीं है. So whenever they are going to ask the management, answer will stay the same. Okay, answer will stay the same. So let's start orthopedics. How many questions? At least 8 to 10. Okay, you would have studied Salter and Harris classification, right? Now I'm going to give you two hints. Okay, I'm going to give you two hints. If you would have studied the management of fracture, like if the growth plate is involved, open reduction, right? And if growth plate is not involved, then it is close reduction. So how we are going to remember? Remember, if bone end is involved, if bone end is involved, okay, उसमें क्या करेंगे हम? Open reduction. Okay, if both end bone end is not involved, then we will do close reduction. Reason, right? ग्रोथ प्लेट होती है. लॉजिक याद रखना है, बस डेफिनेशन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है. ओके, द क्लासिकल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. टेल मी व्हाट इज द फ्रैक्चर. द फ्रैक्चर इज, एवरीबॉडी नोज, यहाँ पर कौन सा बोन होता है? दैट इज क्लेविकल फ्रैक्चर. Clavicle fracture, right? Clavicle fracture. Now tell me most common site. This question has been asked in your previous exam, last to last attempt. Most common site is, if we will divide clavicle into three parts, clavicle into three parts, then the answer will be middle 1/3. In short, beach wala part, right? And if you will divide clavicle into into anterior posterior, ठीक है. The second most common site is, sorry I forgot, posterior 2/3. Okay, posterior 2/3. दोनों भी ऑप्शन में आ गए. Then what will be the answer? This will be the answer. Okay, both answer are correct, but if you have to choose best one, the answer will be middle 1/3. Okay, this has been asked. What is the management of clavicular fracture? That is called as, take a look over here. Okay, okay, this is called as, what it looks like, नाम में है, डायग्राम में है, देखो. This is called as figure of 8 bandage. Figure of 8 bandage. Then to stabilize clavicle, we can give him arm sling. This is called as arm sling. Okay, इसको हम arm sling बोलते हैं. This is the management of clavicular fracture. ठीक है. Examiner's favorite, shoulder and hip. What do you think? Which one, anterior or posterior? Shoulder dislocation की बात कर रहे हैं हम. What do you think? See, now take a look at my video. This is our, क्या होता है ये, स्कैपुला पे
कौन सी कैविटी का नाम है? व्हाट डू थिंक? व्हाट इज दिस इन द डायग्राम? दिस इज humerus, right? Humerus. S stand for hand. So humerus, yes, gleanal cavity, correct. In the gleanal cavity, what we have? Humerus head. If I want to dislocate it anteriorly, anteriorly means आगे की side, front side, and posterior means back side. Okay. If I have to dislocate, if I have to dislocate my humerus head from the glenoid cavity, the head should go which side? This side. That is called as anterior dislocation, right? If posterior dislocation of shoulder, उसमें क्या होना चाहिए? द हेड शुड गो बैक साइड, राइट? देखो फिर से, एंटीरियर फ्रंट साइड, पोस्टीरियर बैक साइड, राइट? सो व्हेन, if the examiner is going to give you, if the examiner is going to give you image, if you are looking head in front of glenoid cavity और ये जो बोन जा रहा है, राइट, स्कैफोल्ड प्रोसेस के आगे दिख रहा है, that means it is anterior dislocation. Okay, that means it is anterior dislocation. Now take a look. As I said, posterior dislocation में head किधर जाएगा? It should go back side. So see, it is going back side. This is front side. This is front side. आगे की तरफ है. The head is going back side. Right? So images पे समझ आ गया? This will be called as anterior dislocation of shoulder, right? This will be called as posterior dislocation. Okay. Second hint, when you are seeing a X-ray, the head will be pulled down. Okay, pulled down. Over here, head will be where? Pulled back. Okay, or up, ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, right? Now, just imagine your shoulder. Imagine your shoulder. If you want to dislocate your shoulder, okay, if you want to dislocate your shoulder toward anterior side, what should be the moment of that of your hand? किस साइड इसको जाना चाहिए? When you will put a pressure like this, okay, do this like this. If you will put a pressure like this, the head moves toward anterior side. So this is called as what? Abduction, right? इसी को हम बोलेंगे external rotation, because you are going away from the body. Then only this head will move, right? Then only this head will move, and this is the clinical feature, right? When patient will come, क्या हिस्ट्री देगा? Abduction plus external rotation. तब जाके you are facing stress toward your anterior side. तो जब डिसलोकेट होगा तो वो किधर की तरफ निकलेगा? It will come towards anterior side, right? So anterior dislocation में क्या हो रहा है? Abduction going away from the body is called as external rotation. Now posterior dislocation में क्या होना चाहिए? What do you think? I want to move this head back side, right? Back side move करेंगे तभी posterior dislocation बोलेंगे ना. So what it should be the moment? Now if you will do it like this, you will feel pressure on their back, right? इस side में हो रहा है. That means humerus head is going towards the back side. That is called as adduction plus internal rotation. Reason, हाथ अंदर की तरफ घूम रहा है, right? आया समझ में? And these are the features of this both
डिसलोकेशन। बात समझ आ गई? अंडरस्टूड? इमेजेस से आएंगे ऐसा नहीं है। फ्रैक्चर्स आर इजी इफ यू विल इमेजिन इट। समझ आ गया? नाउ टेक अ लुक, राइट? टेक अ लुक, वही लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट इट इज रिट, है ना? जस्ट इमेजिन दिस डिसलोकेशन, यू विल सी इट। ठीक है? नाउ टेल मी व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटी ओवरऑल योर शोल्डर डिसलोकेशन। एक बार कंधा उतरा है तो बार बार उतरेगा, दैट द मीनिंग इज recurrence. Okay, that is called as recurrence, right? Once you had shoulder dislocation, your shoulder dislocation will be there again and again. Okay, most common nerve injured, what do you think? That is axillary nerve. That is called as axillary nerve, correct? The fracture of glenoid labrum, there will be tear in labrum. Okay, tear in labrum is called as Bankart lesion. इसी को हम क्या बोलते हैं? Bankart lesion. ठीक है? What is this? The dip which is present over here is called as what? Heel sac lesion. Heel sac lesion. The dip over here is called as reverse heel sac lesion. Okay, reverse heel sac lesion, right? ठीक है? What is the treatment? What is the treatment? What do you think? Patient had abduction and external rotation, right? To get anterior dislocation. What will be the treatment of that? Most common shoulder dislocation is anterior, right? Yes, it is opposite. ऐसे हाथ गया था बाहर, हम उसको उल्टा करके वापस लाएंगे to fix it in glenoid cavity. So what will be the treatment of anterior shoulder dislocation? Abduction था. We had abduction. Now what we will do? Adduction plus internal rotation. Posterior dislocation का क्या होगा? Adduction हुआ था. We will do abduction plus external rotation. Opposite. Treatment क्या है? Opposite. Right? This is the treatment that is called as Kocher's method. Kocher's method, we will use it. And the second one is Stimson maneuver. Stimson maneuver. ठीक है? That was shoulder dislocation. Clavicle हो गया, shoulder हो गया. We will come down. What is this? Fracture of shaft of humerus, right? Fracture of shaft of humerus. बीच की बॉडी टूटी है, right? Which nerve is damaged? And this is your recent question. Yes, it is
radial. Radial, correct. Now, what will be the treatment? If you remember first line which I told you in the class, at the start of the class, if a bone end is not involved, what will be the management? Close reduction plus internal fixation. Right? Growth plate involved nahi hui hai. That's why. Take a look over here. We will put a cast. We will put a cast that is called as U cast. Okay. दिख रहा है ये U जैसा? This is called as U cast. मैनेजमेंट में इसको यूज करते हैं हम U cast. Okay. U cast. Which braces will be used? The name of this braces? The name of this braces is Sarmento brace. Okay. Sarmento brace. पूछे जा चुके हैं, है ना? यहाँ का फ्रैक्चर हो तो यहाँ पे ब्रेस लगाएंगे, राइट? द नेम इज सरमेंशियो ब्रेस. Recent question. 90% of the question last time were from this PDF only. What is this? What do you think? क्या बोलते हैं इसे? फ्रैक्चर कौन सा? Now take a look. Hand. Okay, hand. This is lateral condyle. This is medial condyle. If the fracture is lateral condylar fracture, the hand will go out. The hand will go out. Okay, that is called as valgum or valgus. Valgum or valgus. Remember gum. Okay, M. Valgum in upper hand will be, hand is going to be going outside. Okay. Yes, varum. Varum means the both knee will come together. Okay. Gum इसमें opposite है. Hand will go out. This is genu valgum. Okay. Fracture कौन सा है? The fracture is of lateral condyle of humerus. क्या इन्वॉल्व हो रहा है? The bone end is going to be involved, right? So bone end के लिए what is the management of the fracture? The name is open reduction. As I said, if the growth plate is involved, that means bone में union नहीं होंगी, right? Union नहीं होंगी. So what we need to do? Internal fixation with what? K wire. Screw जो डाले हैं इसे K wire बोलते हैं. This is called as K wiring. K wiring, right? K wiring. What is this? Which fracture? What do you think? This is called as which head? Radial tuberosity, right? Radial tuberosity बोलते हैं इसे हम. If the fracture is present
along the radial tuberosity. That means it is lateral condyle of humerus fracture. So ये क्या है actually? ठीक है? If fracture is opposite to radial tuberosity, the fracture will be medial condyle of humerus fracture. बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? कैसे पकड़ना है पेपर में आया तो? रेडियल ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर अलोंग विथ इट, जो कि यहाँ पर है प्रेजेंट, दैट इज लैटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर. बट फ्रैक्चर यहाँ होता, दैट मीन्स इट इज मीडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर. ठीक है? Now we don't have option, something called as middle condyle of humerus fracture. So answer over here is, अगर वो ऑप्शन में दो तो that will be better answer, but it is not there, so answer will be supracondylar fracture. Okay, supracondylar, above the condyles, right? That means इसके अंदर ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व नहीं हुई है. ओके, ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व नहीं हुई है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज supracondyle, above the condyle, above the condyle, इसी को बोलते हैं supracondylar fracture. So what will be the management over here? Try to answer. Till then, we will discuss something else. It look like fish, right? So this is called as fish tail. Fish tail sign. Right? There will be redness present. ये इसमें बस यहाँ पर याद रखना, जो हिंट दी है, एक्चुअली ग्रोथ प्लेट इज प्रेजेंट विद द कॉन्डाइल्स. ओके, ये कॉन्डाइल्स के ऊपर का फ्रैक्चर है. ओके, कॉन्डाइल्स के ऊपर का फ्रैक्चर है, दैट मींस ग्रोथ प्लेट इज नॉट इन्वॉल्व. सो आंसर ओवर हियर इज, if growth plate is not involved, that means close reduction and internal fixation with what? K wire. Okay, with K wire. ओपन रिडक्शन नहीं होगा, इसको याद रखना है. lateral condyle and medial condyle we will do open reduction. Okay, but in supracondylar, above the condyles, we will do close reduction. इसको याद रखना है. Now take a look over here. कुछ दिख रहा है? Something is different than the normal. This is called as fat pad sign. This is called as fat pad sign. Okay, it is seen in supracondylar fracture. What do we use? Which traction is used for supracondylar fracture? Anyone? This is called as which traction? Anyone? This is called as Dunlop traction. This is called as Dunlop traction, right? And as I said, what we will do over here? Close reduction, internal fixation with what? K wire. Okay, K wire.
ये जो है स्क्रूज जो दिख रहे हैं तुम्हें, एक्चुअली इट इज वायरिंग। ओके, के वायर बोलते हैं सर। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस? वी हैव सीन द इमेज, राइट? क्या बोलते हैं इसे? इफ द हैंड इज गोइंग डाउन एंड इफ विल टेक इट लाइक दिस, ओके, क्या दिख रहा है ये? इट लुक लाइक अ गन, इट लुक लाइक अ गन, दैट इज कॉल्ड एज gun stock deformity, right? Gun stock deformity. Gun stock deformity. And ossification of bone in the muscle is called as what? It is called as myositis ossificans, इसी को बोलते हैं myositis ossificans. What is the treatment for gun stock deformity or management? These are the clinical features which we see. Treatment for gun stock deformity क्या होती है? The name is French osteotomy. French osteotomy. And what is the treatment for myositis ossificans? Ossification in the muscle. Management क्या है इसकी? I know people consider ortho as a very hardest subject to crack, but एक बार अच्छे से पढ़ लो, out of mark देने के chances है. This is the only subject which can give out of marks. Treatment is immobilization. Treatment is immobilization, right? Active stage में क्या देंगे? If patient is presenting with active stage, मतलब myositis ossificans is just started to form, उसी को active stage बोलेंगे, right? What we will give to this patient then? No one. NSAIDs, patho, ortho, medicine, myositis ossificans बहुत जगह पढ़ाया जाता है. NSAIDs will be given, but the definitive management is immobilization, right? Immobilization. Okay. Walkman's ischemic contracture क्या होता है? What is going to happen over here? Ischemia forearm muscles, right? Because of that, there will be loss of sensation in the hand, right? Sensory and motor paralysis of the hand will be seen. The question which has been asked is, okay, you would have studied for this Walkman ischemic contracture for upper limb fracture. Okay, it can be present in lower limb also. ठीक है, क्या हो रहा है वहां पे? मसल का इश्केमिया हो रहा है, राइट? मसल डैमेज हो रही है. बिकॉज ऑफ दैट there is going to be sensory loss of motor paralysis, so it can present anywhere. Okay, it can present anywhere. So what we are going to give to this patient, ऐसे समझ लो, एक kind of duplicate muscle, right, which can act with your bones and nerve, right? कौन सी होंगी? Whenever you are getting image from upper limb or lower limb, what I'm saying, upper limb or lower limb, if there is presence of structure like this, okay, the answer is turn buckle splint. ठीक है, क्या याद रखना है?
अगर ये ऐसा कोई स्प्रिंग जैसा प्रेजेंट है, then 90% of the time answer is going to be turn, buckle, split. And when they are going to give you question, they will write down this. Paralysis होगा मसल का, right? Okay. Yes, it is going to be uploaded on YouTube, and you can get the PDF from the Telegram group. Don't worry. ये हो गया. Now comes the fracture management of कौन सा? Fracture of both radius and ulna. What I'm saying, fracture of both radius and ulna. Montesian गैलेजी दोनों के फ्रैक्चर नहीं है, फ्रैक्चर ऑफ वन एंड डिसलोकेशन ऑफ वन है. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्रैक्चर ऑफ बोथ. रेडियस का भी फ्रैक्चर है, अल्ना का भी फ्रैक्चर है. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग. इफ ये हुआ है, नाउ अपर 1/3 ऑफ फ्रैक्चर हुआ है रेडियस एंड अल्ना का. सो व्हाट विल बी द मैनेजमेंट is supination. Middle 1/3 of radius ulna fracture, which you can see in the image, mid pronation. And distal 1/3 is pronation. कैसे होगा? This is called as supination. This is called as mid pronation. Okay, and this is called as pronation. Supination, mid pronation, pronation. Okay, पूरा हाथ का होगा, जस्ट अभी इसमें नहीं दिखा सकता यार. ठीक है. सुपिनेशन मतलब पूरा हाथ सोआ है, मिड प्रोनेशन मतलब बीच में है, सीधा हो गया पूरा. दैट इज कॉल्ड एज प्रोनेशन. Examiner's favorite, recent 2. What do you think? What is the fracture name? I am going to give you the hint. Remember this first. Locate the thumb. Locate the thumb on X-ray. The bone which is present near to thumb is called as radius. Opposite to thumb will be called as ulna. हमें क्या याद रखना है बस? थंब के साइड वाला बोन रेडियस है, अपोजिट कौन सा है? अल्ना है. नाउ कौन से दो फ्रैक्चर है? मोंटेजिया एंड गैलेजी, राइट? मोंटेजिया एंड गैलेजी. नाउ टेल मी, what is the definition of Montegia and what is the definition of Galeazzi? Complicated, right? Those fracture of one and dislocation of other. Now हमें क्या करना है, याद क्या रखना है बस हमें? फ्रैक्चर कौन सा है? okay, dislocation will be the opposite bone. Montegia, right? इसको हम याद रखेंगे Montugia. okay, Montugia. U stand for ulna, right? पल पल न माने पिंकू जिया गाना सुना है. What we have over here? We have Montugia in orthopedics. U stand for fracture of ulna, right? Galeazzi में क्या होगा? Fracture of radius. एक याद रखो, opposite कौन सा है? वही है. Fracture of radius and dislocation of ulna will be called as Galeazzi. Fracture of Montugia, that means fracture of ulna, right? Dislocation of radius.
वो हिंट क्या थी? लोकेट द थंब ऑन एक्सरे, the bone which you will see is radius, right? Now try to answer this. One bone is dislocated, one bone is fractured, right? Locate the thumb on x-ray. जो छोटा वाला बोन दिखेगा वो थंब होता है. The fracture will be called as radius fracture and dislocation will be called as ulna, right? So this is कौन सा fracture है? Again thumb locate किया, the fracture is radius, dislocation opposite है. So this is Galeazzi fracture, right? समझ आ गया कैसे? Take a look again. Locate the thumb. The bone is radius. Opposite bone is ulna. The fracture of ulna and dislocation of radius will be called as what? Montugia. है ना? U, Montu. U stand for ulna. So fracture of ulna, dislocation of radius is called as Montugia. Fracture of radius and dislocation of ulna will be called as what? Galeazzi. Right? Galeazzi. ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या है इसकी? ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन इन ऑल, बट इन चिल्ड्रन वी विल डू क्लोज रिडक्शन इन गैलेजी फ्रैक्चर. ये याद रखना है तुम्हें, राइट? समझ आ गया? दोनों फ्रैक्चर समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट वंस. इफ यू कैन सी ओवर हियर, फ्रैक्चर कैसे होता है? द बोन विल बी कट थ्रू एंड थ्रू, राइट? बोन विल बी कट थ्रू एंड थ्रू. व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर? इट इज नॉट थ्रू एंड थ्रू. तुम्हें बस इतना याद रखना है, इट इज नॉट थ्रू एंड थ्रू. देखो डिंग से पूरा फ्रैक्चर हुआ है? नहीं हुआ, राइट? सो फ्रैक्चर ऑफ वन कॉर्टेक्स ऑफ बोन इज कॉल्ड एज व्हाट? It is called as green stick fracture. Okay, through and through bone cut नहीं हुआ है, बस उसका one cortex of bone is damaged. That is called as green stick. ये green stick थी. There is one more stick that is called as night stick fracture. Night stick कहाँ पर होंगी? The fracture of only ulna bone. Fracture of only ulna bone is called as night stick. Okay, this is called as night stick fracture. समझ आ गया? ग्रीन स्टिक एंड नाइट स्टिक, दो स्टिक है ऑर्थो में. नाउ पेशेंट केम विथ fall on outstretched hand, outstretched hand, and x-ray is done. What do you think? सब कुछ दिया हुआ है तुम्हारे सामने. Now if I give you x-ray of Colles fracture, okay, we are talking about Colles fracture. First is hand कैसा होगा? Outstretched hand. Fracture of hand, in short. Hand is getting dislocated from
the bones. Okay, hand is getting dislocated from bones is called as Colles fracture. Now, मेरा हाथ, my hand is outstretched. Okay, ऐसे गिरा हूं मैं जाके जमीन पे. My hand is outstretched. So what will happen with this fragment which is going to fracture from the bones? Bone से टूट रही है, तो what can happen? This fragment will go which side? यहाँ पे आके लगा है, ऐसा सट करके लगा. सो क्या होगा? This fragment will go towards back side and the bones will come front side. Okay, bones will come front side. Now take a look. क्या हुआ है? The fragment is back and the bone will be front side. That is called as Colles fracture. Colles fracture. Okay, that is called as Colles fracture. And which cast we apply? We apply hand shake position. Okay, hand shake position. If at all, if you are not able to remember, thumb will not be covered. Thumb will not be covered in Colles fracture cast. Okay, Colles के अंदर हम thumb को cover नहीं करेंगे. Right? Now comes reverse Colles. That is called as Smith fracture. Inward, अंदर की तरफ. Okay, if there is a fracture from this side, so what will happen? What will happen? The fragment will move ahead. Take a look over here. The bone will be backward side. That is the hint to caught on X-ray. Bone किस तरफ जाएंगे? पीछे. If you look it from outside, bone दिख रहा है, and hand will be ahead. हाथ कहाँ होगा? आगे की तरफ. Right? The appearance is called as what? Ace of spade. Right? ये क्या होता है? गार्डन में यूज करते हैं हम फावड़ा. राइट, फावड़ा अपीयरेंस. Recent question. Tenderness in anatomical snuff box. The fracture name is easiest one. Scaphoid fracture. Okay, scaphoid fracture को बोलते हैं tenderness in anatomical snub box. As soon as you will see this line, remember the answer is scaphoid fracture. ठीक है, and the cast which we are going to apply, and that cast has been asked in last to last attempt. When you see a cast is applied on thumb, when you see cast is applied on thumb, remember it is scaphoid fracture. It is not applied on thumb. Okay, यहाँ पर भी देख लो. That means it is Colles fracture. ठीक है, direct image can be given. Reason, scaphoid bone thumb के नीचे ही है, so we have to immobilize the thumb as well. That is the reason. Okay, that is the reason. Anatomical snub box. Which nerve passes from anatomical snub box? The nerve is radial nerve. The artery which going to pass will be a radial artery, right? Locate the thumb, याद है? The bone is radial bone, right? So nerve कौन सी होंगी near the thumb? Radial nerve.
आर्टरी कौन सी होंगी? रेडियल आर्टरी, राइट? सो स्नब बॉक्स में से क्या जा रहा है? व्हाट इज गोइंग? दैट इज रेडियल नर्व एंड आर्टरी विच इज गोइंग टू गो. ठीक है. This image has also been asked. Even the boundaries of snub box has been asked. Okay. Commonest question from anatomy and ortho. Fracture of thumb. इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्चर ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल. ओके. फ्रैक्चर ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल. इफ इट इज ऑब्लिक. ओके. ऑब्लिक मतलब straight line, right? It is oblique. The name of fracture is what? First metacarpal का, right? Remember first day, right? The name of the fracture is Bennett. Bennett fracture. How you will remember? Bonnet. How you will remember? Bonnet. O-N-E आ रहा है. How you will remember? Bonnet. One. Fracture of first metacarpal. Okay. Fracture of first metacarpal. Now comes Y-shaped. Y-shaped fracture of first metacarpal. Y-shaped fracture of first metacarpal. If you remember, Ronaldo, whenever he score, he make that celebration. It look like Y, right? It look like Y. So this fracture name is, you can say Ronaldo, but the name is different little bit. Rolando. ठीक है. Rolando fracture. Sounds similar with Ronaldo. Ronaldo का celebration है, right? Same. Same है. First, second, third, fourth, fifth. Okay. Fifth. Fracture of fifth metacarpal. Okay. Name is boxer's fracture. Name is boxer's fracture. Now calculate the alphabet. Fifth metacarpal. Right? Fracture of fifth metacarpal will be called as, alphabet speaks itself. The name is boxer's fracture. ठीक है. Boxer's fracture. Controversial images. Okay. But whatever I am saying, you should follow that. Okay. If you have said Pope, they bless them like this. Okay. They bless them like this. पुजारी की बात नहीं कर रहा. What I am saying? Pope. Okay. God bless you, child. So this is called as Pope hand. Okay. Pope hand. Pope hand. And thumb is stuck. Thumb is stuck to the hand is called as ape thumb. Ape thumb. To ape thumb, what we will give? Which splint is given in ape thumb? The name is opponent splint. Okay. Name is opponent splint. Pope hand, ape thumb, opponent splint is seen in median nerve palsy. Median nerve palsy. ठीक है.
This is called as claw hand. क्या बोलेंगे हम इसे? Okay, this is called as claw hand. Okay, किसमें मिलता है claw hand? We will see it in ulnar nerve pulse. Ulnar nerve palsy. And the splint which we give to ulnar nerve palsy is called as knuckle bender splint. Knuckle blender splint. Which tests are done? Right? We will give a book to patient and tell him to hold like this. Okay? If they are not able to hold the book in their hand, that is will be ulnar nerve palsy. So name of this test is book test. Book test. Okay? Igawa test. Okay? As soon as we will press it like this, that fingers will go back again. This is called as Igawa test. Okay? We will hold a card in our hand and tell the patient to take it from their side. खींचने बोलेंगे. They will be not able to take it out. That is called as card test. Card test. Recent question. What is this? This is called as wrist drop. Image आई थी where they have shown you wrist drop. Wrist drop is seen in which nerve palsy? It is seen in radial nerve palsy. This was your recent question. Now, अगर हाथ नीचे पड़ गया, ड्रॉप हो गया, right? You use this hand, boys, right, to do something, and the name of the splint is the same. Name is cock up splint. Name is cock up splint. Okay, we will up our hand. नाम क्या है उसका? Cock up splint. Recent question. What is this? This is called as winging of scapula. Winging of scapula. Which nerve is damaged in winging of scapula? Remember, the answer is nerve to serratus anterior. Nerve to serratus anterior is damaged. If it is not in the option, then you should go for long thoracic nerve. ठीक है? If it is not in the option, तब उसका आंसर long thoracic nerve है. Okay? एक बोनेट था 1, right? First metacarpal. Then we have Jefferson. Sun sound similar with 1, right? Sun 1, right? So fracture of first vertebra. Fracture of first vertebra is called as Jefferson fracture. One sun. Okay? Fracture of first vertebra. First vertebra. Now, second vertebra. Second vertebra is fracture. That fracture name is hangman fracture. Second vertebra अगर fracture हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे?
द नेम इज हैंगमैन फ्रैक्चर। ठीक है, पूछे जा चुके हैं कि वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इट हैज बीन आस्क्ड। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। The fracture is 7, C7 और 8 नहीं होता. This is dorsal vertebra, that is called as D1. Okay, D1. Clay Shevler fracture. Clay Shevler fracture. C for cervical fracture, right? C. S stand for 7. So it is C7 vertebra fracture. If C7 is not in the option, then you will mark D1. Okay, कैसे याद रखना है? Clay, C, S stand for 7. Okay, this is the way to remember orthopedics. ठीक है, वरना सब बोरिंग है. What is the answer for this? Splint which is not present. Splint which is not present on the neck. Okay, splint which is not present on the neck is called as टेलर ब्रेस स्प्लिंट. ठीक है, लड़की से हमें कुछ लेना देना नहीं है. द नेम ऑफ स्प्लिंट इज टेलर ब्रेस स्प्लिंट. स्प्लिंट विच इज प्रेजेंट ऑन द नेक, क्या बोल रहा हूं मैं, नेक पे है, इट इज कॉल्ड एज मिलवायु की स्प्लिंट. क्या बोलेंगे हम इसे, मिलवायु की स्प्लिंट. ठीक है, पूछे जा चुके हैं, बोथ हैज बीन आस्क्ड. टेलर ब्रेस स्प्लिंट, मिलवायु की स्प्लिंट. सम स्पाइन, सबने ये शर्ट पहना है स्ट्रिप्स वाले, ब्लैक व्हाइट, राइट. द नेम ऑफ दैट टी शर्ट को क्या बोलते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एज रैगर जर्सी. जर्सी. ओके, नाउ टेक अ लुक ओवर हियर. व्हाइट ब्लैक व्हाइट, व्हाइट फिर ब्लैक है, देन व्हाइट, व्हाइट ब्लैक व्हाइट, है ना, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज रैगर जर्सी स्पाइन. सीन विच डिसीज? It is seen in chronic renal failure. Okay, it is seen in chronic renal failure. What is this? What do you think? Picture frame vertebra. पिक्चर की एक फ्रेम है यहाँ पर, पिक्चर की एक फ्रेम है. Okay, picture frame vertebra is seen in which disease? It is seen in Paget's disease. Okay, it is seen in Paget's disease. How many of you have watched Game of Thrones? How many of you have, of course all of you have watched, right? Right. And बचपन में एक सीरियल आती थी, विकराल एंड गबराल. दैट गबराल द स्मॉल गाय, और टीरियन लैनिस्टर. टीरियन लैनिस्टर क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज अखैंड्रोप्लाजिया. Achondroplasia. These people will have
a bullet shaped vertebra. What they will have? Bullet shaped vertebra, right? Now there is one famous question: do these people, the small peoples, will have mental retardation? Will they have mental retardation? If you have watched Game of Thrones, this guy had mental retardation. This guy had mental retardation. Forget it. Okay, this guy. Actually, the sharpest guy in the Game of Thrones series was Tyrion Lannister, right? जिसके पास सबसे ज्यादा दिमाग था. So remember, achondroplasia will not have mental retardation. So no mental. Okay, ठीक है, याद रखना है इसको. कैसे? गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हुआ है, नो मेंटल रिटार्डेशन, सबसे शार्पेस्ट है वो तो. ठीक है, नो मेंटल रिटार्डेशन. दिस इज कॉल्ड एज कॉड फिश वर्टिब्रा. क्या बोलेंगे हम इसे? कॉड फिश vertebra. Now, codfish vertebra is seen in osteoporosis. Okay, codfish vertebra is seen in osteoporosis. I used to remember it like this. Fish ऐसे दिखती. So this is called as codfish vertebra. Okay, seen in osteoporosis. If you can appreciate, bamboo straight होता है, and you will see the marking strips होती. Same goes over here. Straight है, and we do have markings, right? This is called as bamboo shaped vertebra. Seen in what? Or bamboo spine भी बोलते हैं इसे, right? It is seen in, yes, yes, ankylosing spondylitis. Okay, has been asked. Recent one. Recent question, quite controversial. ये इस बार का भी है. Some people are saying it. Some people are saying that one different question. लो पोस्टीरियर हेयर लाइन. ऐसा लग रहा है हेयर इसके कंधे पे लगे हुए, राइट? लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, short neck, short neck, right? S-shaped, S-shaped vertebra, and one side is upward, scapula ऊपर की तरफ है. This is called as clippal fail syndrome. Clippal fail syndrome. Okay. Now what is going to happen? There will be fusion of C2 and C3 and C4 and C5. Vertebra will be fused. Okay. Most commonly it is fusion. किसी ने पूछा है तो आंसर is C2 C3. Okay. C2 C3. Okay. इमेज देंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे. दे विल राइट डाउन दिस क्लिनिकल फीचर्स. क्या क्या है? लो शॉर्ट नेक, राइट? इफ देयर इज अ नेक शॉर्ट है तो मूवमेंट ऑफ द नेक विल बी लिमिटेड, राइट? सब तरफ तुम घुमा नहीं पाओगे, है ना? सो दैट इज द क्लिनिकल फीचर. एंड देयर विल बी लो पोस्टीरियर हेयर लाइन. शॉर्ट नेक है, so hair will be going till the shoulder.
right? Whenever you are getting image, okay, with question, क्या लिखा होगा उसके अंदर? Child presented and his head is not in the acetabulum, okay, not present in the acetabulum. Take a look over here again. Acetabulum गोल होता है, right? Acetabulum गोल होता है. Take a look over here. दिख रहा है गोल? नहीं, right? We are not able to see. It is round in shape. Round in shape नहीं है. So that's why head of the femur is roaming somewhere else. So क्या होगा यहाँ पर? This is called as developmental dysplasia, right? Developmental dysplasia of hip. DDH बोलते से, okay? DDH, developmental dysplasia of hip. Round shape दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा. That's why you are seeing head is roaming somewhere else, जहाँ उसको जगह मिलेंगी, right? इसी को हम बोलते फ्लैट एसेटाबुलम, okay? Flat acetabulum. Which splint is used in developmental dysplasia of hip? Splint पूछे जा चुके. Now take a look over here, right? दो टेस्ट करते हैं हम इसके अंदर. नेम इज बार्लो टेस्ट एंड ओटानी टेस्ट, राइट? दिस टेस्ट आर डन. इफ यू आर सीइंग स्प्लिंट विच इज इन्वॉल्विंग लेग, ओके, पूरे बॉडी पे स्प्लिंट लगा होगा एंड विच इज इन्वॉल्विंग लेग एज वेल, इज कॉल्ड एज पावलिक हार्नेस, ओके, पावलिक हार्नेस. इफ split is not involving leg but it is present all over the body, ठीक है, इसको बोलेंगे हम वन रोजन स्प्लिट. वन रोजन स्प्लिट, ठीक है, पूछे जा चुके हैं. एग्जामिनर्स फेवरेट. If you remember, as we are talked in anterior and posterior dislocation of shoulder, same thing is going to happen in legs when there is fracture of leg, right? If I want to fracture my leg from acetabulum, femur head किधर होना चाहिए? आगे की तरफ, राइट? femur head किधर होना चाहिए? आगे की तरफ. If I want to fracture, posterior dislocation करना है मुझे hip का, so femur head will go backward, right? Backward, या फिर कहीं और निकल के जा रहा होगा. हेड आगे की तरफ दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट? Same which logic which we have used in shoulder dislocation. Flexion, abduction and external rotation. एक्सटर्नल रोटेट होगा ना जब पैर ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा टूट के, राइट? देन ओनली इट इज गोइंग टू हैपन. सो फ्लेक्शन, abduction and external rotation is called as Faber. Faber will be seen in anterior dislocation. Flexion, abduction, external rotation, right? Flexion, adduction, internal rotation will be seen in posterior dislocation of hip, right? यही तो हमने पढ़ा था, राइट? सेम जो एंटीरियर डिस्लोकेशन में हो रहा है सेम प्रोसीजर है, ओके, सेम है. टेक लुक.
you are able to see head which is ahead, आगे की तरफ निकला है, पीछे की तरफ है। एंटेरियर शोल्डर डिसलोकेशन भी हमने यही देखा था। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, राइट? व्हाट वी विल सी, the head of the femur will be down and it will be in the front, आगे की तरफ, right? Over here it will be up and in the back side. ये एक hint है when you are going to get X-ray, but remember theoretical questions comes, okay? Even anterior shoulder dislocation, posterior shoulder dislocation, जैसे मैंने बताया वैसे लिख के आएगा, okay? X-ray आना चाहिए, ऐसे नहीं है, okay? फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, राइट? सॉरी, मैनेजमेंट क्या होंगे इसकी? यस, क्लोज रिडक्शन प्लस स्क्रू, राइट? स्क्रू करेंगे या फिर नेलिंग, स्क्रू और नेलिंग, ठीक है? फ्रैक्चर ऑफ iliac crest with contralateral, contralateral मतलब अपोजिट साइड का, with contralateral ramus is called as which fracture? बकेट हैंडल फ्रैक्चर, ठीक है? बकेट हैंडल फ्रैक्चर, बकेट ऐसी होती, ऊपर से इसके हैंडल जैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक अ हैंडल, दैट इज कॉल्ड एज बकेट हैंडल फ्रैक्चर। Take a look over here, you are able to see ramus fully, you are able to see ramus fully over here, कहीं पे राउंड दिख रहा है, यहाँ पर एक बोन है, यहाँ पर बोन है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड, दैट मीन्स इट इज अ फ्रैक्चर ऑफ ramus and there is a line which is going, this is fracture of iliac crest, of course, with ipsilateral ramus, will be called as Malgagny fracture, will be called as Malgagny fracture। समझ आ गया? What is this? Fracture of both the ramus, it is called as, yes, straddle fracture, इसी को हम बोलते हैं straddle fracture, ठीक है? Trendelenburg sign, Trendelenburg sign, in which disease we see Trendelenburg sign or Trendelenburg gait, and tell me which muscle is defective over here?
तीन ऑप्शन है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस. What will be the answer? The answer is gluteus medius, not maximus. Do not confuse yourself. It is gluteus medius, right? The disease where we will see Trendelenburg sign or gait is called as PCMs. ठीक है, ऊपर नीचे हो गया. पोलियोमाइलिटिस, cerebral palsy, muscular dystrophy, motor neuron disease, and superior gluteal nerve damage. Okay, paracetamols, PCMs. You can remember this. Here we will see Trendelenburg sign positive. So अगर उन्होंने लिखा है Trendelenburg sign is positive, you have to rule out all these diseases. Okay, you have to rule out all these diseases. ये तो याद रखना, राइट? वो याद रखना है कि यू हैव टू रूल आउट पोलियोमाइलिटिस फर्स्ट. थोड़े अपर लोअर लिम के फ्रैक्चर पढ़ लेते. वी हैव स्टडीड वर्टिब्रा, वी हैव स्टडीड अपर लिम. नाउ कम्स हिप भी हो गया. दो चार इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है जो तुम्हें नीचे के आने चाहिए. फर्स्ट इज फ्रैक्चर ऑफ shaft of humerus. If I am going to give you image directly like this, how to identify whether it is a foot or hand? First, if you are seeing hand, you might be seeing scapula or clavicle. Over here you cannot see scapula and clavicle. And सबसे बड़ा hint is this bone, patella. Okay, patella. So this is femur. F stand for foot. So this is the fracture of shaft of femur. Okay, fracture of shaft of femur. Okay, बच्चा आता है shaft of femur fracture के साथ. What we are going to give? We are going to give him something like this to play. That is called as gallows traction. Okay, gallows traction, right? If we need to transport this patient, what we will use? We will use Thomas splint. We will use Thomas splint, right? And if we are going to put a cast, the name of that cast is hip spica cast. Okay, hip spica cast will be used, right? Treatment. क्या होता है, राइट? दिस को क्या बोलते हैं? टाइटेनियम इलास्टिक नेल. We will put big rods. Okay, we will put big rods in this patient, right? रॉड डाला जाता है पैर में. रीजन है जल्दी ठीक नहीं होता. इट टेक्स इयर्स टू मतलब नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए. Recent question again. What is this? Easy है. नी में क्या होता है? We have patella. We have patella. ग्रोथ प्लेट कहाँ होती है हमें पता नहीं है. फ्रैक्चर पे कहाँ से पता चलेंगे ग्रोथ प्लेट उसमें डैमेज हुई नहीं हुई है? So what we will do? We will put figure of 8 K wiring. Okay, tension band figure of 8 K wiring will be put in patellar fracture.
ओके, फर्स्ट में करते हैं पटेलर फ्रैक्चर. फ्रैक्चर ऑफ बोथ. ओके, टिबिया एंड फिबुला. फ्रैक्चर ऑफ बोथ. कौन से बोन? एंड बोन्स, राइट, एंड बोन्स. इसी को बोलते बाय मैल्योलार फ्रैक्चर. क्या बोलेंगे हम इसे? बाय मैल्योलार फ्रैक्चर. What will be the management? End of the bone is involved. If you remember first line which I said in the class, क्या होंगी? ओपन रिडक्शन करेंगे, ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व हुई है. With what? Nailing and wiring. That is called as, we will either put screw or plate. This was your last year question. Okay, bimanual fracture management पूछी थी. Management is end of the bone is involved. Open reduction. That's it. Open reduction with fixation by screw or K wire. Easy है और तो समझना जरूरी है. Okay. You have been asked about this disease. Okay. Kohler's disease is seen in navicula. Which bone will be involved? That is navicula. Okay. Cohenbach disease has been asked. The bone is lunate. बाकी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा. Right. Let's come to some diseases before finishing the class. Multiple fracture with, yes, blue sclera. The answer is osteogenesis imperfecta. इसी को बोलते, व्हाट डू यू कॉल इट? दिस डिसीज को क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को और नाम क्या है? व्हाई पेशेंट इज हैविंग मल्टीपल फ्रैक्चर्स अगेन एंड अगेन? द नेम इज ब्रिटल बोन डिसीज. इसी का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का ही, राइट. पेशेंट विल हैव blue sclera. There will be deafness. Okay, developmental dysplasia of hip, right. There will be fractures of teeth. Dentiogenesis imperfecta. This is associated with autosomal dominant. Okay, this disease is genetically कौन सा है? Autosomal dominant. Which classification is used in osteogenesis imperfecta? Selians classification, right. कौन सा classification यूज करते हैं? Selians classification, right. This is the most common cause of multiple fracture in childhood. Which collagen will be defective? If you remember, bone 1 collagen 1, right. Disease bone का है तो, right. And col 1A gene is associated. You can remember by the mnemonic. तुम्हें सबको करना है लेकिन मिल नहीं रहा. BDSM कोल 1 ऐसे याद रखो, है ना. BDSM करने के लिए तुम्हें कॉल तो करना पड़ेगा एक को, राइट. BDSM कोल 1. FMT से पढ़ लेना BDSM क्या है. Patient with avascular necrosis of the head of femur will be seen in which disease? Straight forward line. Avascular necrosis of head of the femur. यहाँ पे लाइन क्लियर दिख रही? Over here you are not able to appreciate acetabulum. So what has happened over here? There will be no limb movement, right. Plus there will be avascular necrosis of head of the femur will be seen in Paget's disease. Okay, Paget's disease. ठीक है, Paget disease में मिलता है.
रिसेंट क्वेश्चन इस बार भी आ चुका है। 60-year-old female, 60-year-old female with pain in bilateral knee। कैसे याद रखना है? ओल्ड फीमेल, old female, right? Old female, answer is going to be osteoarthritis। आंसर क्या है? osteoarthritis। young female, young female, answer is going to be rheumatoid arthritis। ठीक है। young male, answer is ankylosing spondylitis। okay, आया समझ? hint is age with gender, age with gender, and this was your recent question। कैसे पकड़ेंगे? by this, old female osteoarthritis, ठीक है, यंग फीमेल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यंग मेल अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, बस इतना याद रख लो, जाना है, पकड़ना है। ठीक है, ओल्ड मेल में कुछ नहीं मिलता, जिंदा तो रहने चाहिए तब तक, फूक फूक के और दारू पी पी के मर जाते हैं, है ना। इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट, देन कम्स दिस वन। सोरियाट्रिक आर्थराइटिस क्या करता है? इट विल इन्वॉल्व ऑल द जॉइंट। सोरियाट्रिक आर्थराइटिस विल इन्वॉल्व all the joint, right? Rheumatoid arthritis will not involve distal interphalangeal joint, okay? Distal interphalangeal joint will not be involved। ठीक है। Metacarpopharyngeal joint or wrist joint is not going to be involved in osteoarthritis। okay, spared वाले याद रखना, rest psoriatic arthritis का क्वेश्चन आया, लीजन्स हर जॉइंट पे होगा, यहाँ पर भी मिलेगा लीजन। rheumatoid arthritis distal interphalangeal joint will not be involved। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट टू रिसेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज कपिंग। कपिंग seen in which disease? It is seen in rickets। okay, कैसे याद रखना है? when you are seeing a empty hand, ठीक है, नहीं यहाँ समझ में आ रहा है, when you are seeing a empty hand blindly, it is rickets। okay, rickets को मार्क करना है। and if you are seeing a dark, a bright whitish line at the end of the bone, dark whitish line at the end of the bone is called as scurvy। ठीक है, ठीक है, इसी को बोलते हैं व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल। ठीक है, किसमें मिलेंगी? scurvy, it is seen in scurvy। okay, we had something called as valgus and valgum and varum, right? Valgum and varum, genu varum and genu valgum। if you'll put gum at the both the knee, दोनों के बीच में हमने फेविकॉल डाल दिया, what will happen? they will stick। so this is called as genu, क्या बोलेंगे इसको? valgum, है ना। गम डालोगे तो पैर चिपकेंगे,
and if you will take drink rum, what will happen? पागलों की तरह चलोगे. If you will drink rum, what will happen? पैर दूर दूर होंगे. That is called as जेनुवैरम. रम पीने के बाद आदमी किधर भी चलेगा, गम के साथ चिपकेगा. And now take a look in between. Genuvarum at one knee joint and genuvalgum at one joint. Genuvarum बाहर की तरफ पैर निकला, right? And genuvalgum, one leg is going inside. This is called as wind-shaped deformity. Wind-shaped deformity, and it is seen in which disease? Yes, it is seen in rickets, right? What you will see? Delayed closure, frontal bossing, right? ये इमेज तुमने देखी होंगी, बहुत लोग यूज करते हैं. Dental hypoplasia, right? Swelling in wrist joint and ankle joint, right? Harrison groove. Patient had acute history of alcohol intake. Now there is swelling present in the toe, in the foot. Chalo. Acute history of alcohol intake, that is the hint. क्या हो रहा है? Swelling मिली कहाँ पर? पैरों में. The answer is gout. Whenever you are going to get a case of gout, they will write down this. Okay. What happens in gout? Okay, first line of management when acute history of alcohol intake के साथ patient आया था. Now there is swelling. What is the first line? Yes, we will give NSAIDs, painkillers. ठीक है? Painkillers will be given, right? What is the mechanism of colchicine? गाउट में क्या इंक्रीज होता है? इट इंक्रीजेस यूरिक एसिड. ये तो पता होगा सब. कोल्चिसिन क्या करवाता है? फार्मा. इट इनिबिट व्हाट? फिजियो पढ़ा होगा. माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली. It inhibit microtubule assembly. Yes, microtubules inhibitor. See, as soon as you see a MRI spine, what I'm saying, MRI spine in the exam, blindly mark it as a TB of spine. Okay, TB of spine. Most common type of lesion seen in TB is, yes, paradiscal. Paradiscal का मतलब क्या हुआ? One disc, one vertebral disc. Okay, another vertebral disc. Paradiscal means this area. Okay, this is called as, over here, this is the most common type of pot spine. Take a look over here also. ये एक डिस्क है, ये डिस्क, आधा इसका आधा इसका. दिस इज कॉल्ड एज पैराडिस्कल. यहाँ पर तुम्हें मिलेगा. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरीज सिक्का? कैरीज सिक्का क्या होती है? सिक्का मीन्स ड्राई. ओके, सिक्का मीन्स ड्राई. Dry shoulder will be seen in TB of shoulder. Okay, TB of shoulder. Okay,
spina ventosa. TB of what? TB of what? Digits. Okay, TB of digits. Till they write down. If fever is written, okay. If fever is written, then only answer will be osteomyelitis, right? Osteomyelitis, right? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसीलिए तो बोला मैंने फीवर लिखा है वहां पे. फीवर नहीं लिखते तो आंसर विल बी ट्यूमर और बोन सिस्ट, राइट? फीवर लिखा है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मार्क इट एज ब्रॉडीज एब्सेस. ओके, फीवर लिखा होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज समथिंग डिफरेंट. सेम इमेज आई कैन यूज समवेयर एल्स. अगर केस में कुछ लिखा ही नहीं है, who can say this is Brodys abscess, right? So please keep a look on the clinical features which is given. Sequestrum क्या होता है? There is a dead bone trapped in living bone. Okay, ये dead bone होगा जो अंदर trapped होगा in this surrounding living bone. इसी को बोलते हैं piece of dead bone surrounded by infected tissue. Okay, piece of bone surrounded by infected tissue. ये मिलेगा तुम्हें ऑस्टियोमाइलिटिस में. नाउ टेल मी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस. सिंगल वन लाइनर से आते हैं. Okay, when you don't know the answer always stays staph. Yes, always stay staph. Most common location, it is metaphysis. Most common spread will be, yes, hematogenous. Sickle cell anemia may osteomyelitis is caused by which organ? It is not staph aureus. Remember it is. इसीलिए तो पूछा जाता है. दैट इज साल्मोनेला. सबको लगता है ये नहीं होगा. दैट इज साल्मोनेला, नॉट सुडोमोनास. आईवी ड्रग यूजर, नाउ इट इज सुडोमोनास. ह्यूमन बाइट, बेबी ने काटा तो कौन सा बोन का इन्फेक्शन होगा? इट इज इकाइनेला. एनिमल बाइट, है ना, है ना. बेबी को बाबू ने काटा, है ना. एनिमल बोलते हैं ना उसको तुम लोग, कुत्ते. दैट इज पास्चुरेला. राइट. मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व इन ऑस्टियोमाइलिटिस इज नी जॉइंट. इज नी जॉइंट. ठीक है. Triple deformity, flexion, external rotation, and valgus atony associated with posterior subluxation of tibia. One liner आ चुका है. It is seen in TB, rheumatoid arthritis, iliotibial contracture, polio, low clotting factor, and excessive bleeding. Can be remembered by the mnemonic triple itself. Okay. अब आएगा मजा. What is this? Sun with his rays. Sun with his rays. Sun with the rays.
This is called as sun ray appearance or sunburst appearance seen in, yes, it is seen in osteosarcoma. It is seen osteosarcoma. Okay. Now if you can see, there are hollow cavities, right? But in that hollow cavity, if you are seeing a status line, इसी को बोलते हैं हम फॉलन लीफ साइन. पत्ता गिरता है नीचे, है ना, पानी के अंदर, सेम उसी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉलन लीफ साइन. is seen in unicameral bone cyst. यूनिकैमरल बोन सिस्ट. ठीक है. क्या दिख रहा है? स्ट्रेट व्हाइटिश लाइन विल बी प्रेजेंट, उसी को हम बोलेंगे फॉलन लीफ साइन. नाउ टेक अ लुक ओवर हियर. यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है स्ट्रेट लाइन? नहीं, राइट. Over here, remember, if you are seeing outpouching, actually एक्सरे पे आउटपॉचिंग नहीं समझ में आती. ठीक है. एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? आउटपॉचिंग होना, है ना. So there is a cyst which is outpouching out of the bone. So whenever you are seeing such image, please mark it as aneurysmal bone cyst. ठीक है. कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं बताता हूँ. मल्टीपल बबल्स कैसे दिख रहा है? इट लुक्स लाइक अ मल्टीपल बबल्स आर देयर. Aneurysmal bone cyst, only one single bubble. Okay, only one single bubble, and no there is no straight lines. तब उसको मार्क करना है. कौन सा ये? सिंगल जायंट बबल. क्या बोलेंगे इसे हम? जायंट सेल ट्यूमर. करेक्ट. एक जायंट बबल जैसा दिख रहा है बड़ा, राइट. जायंट सेल ट्यूमर. व्हाट वी आर गोइंग टू सी? एग शेल क्रैकिंग साउंड. इसीलिए तो आता है ये पेपर में. एग शेल क्रैकिंग साउंड. ठीक है. एग शेल क्रैकिंग साउंड किसमें मिलेगा? जायंट सेल ट्यूमर में. ठीक है. एंड दिस हैज बीन आस्क्ड. अगर ऐसे वॉयलेट कलर की कोई इमेज आ रही है, रिमेंबर दिस इज जायंट सेल ट्यूमर. ये भी पूछा जा चुका है. ठीक है. There is big growth, and if you'll peel this tumor is called as onion peel appearance. ठीक है. इसी को बोलते हैं. बट इफ यू कैन टेक अ लुक ओवर हियर, बस व्हाट वी आर गोइंग टू सी, देयर इज इंक्रीज इन साइज. ठीक है. नी पे ऐसा लगेगा बस फैट बढ़ा हुआ है. एक्चुअली दिस इज इविंग्स सार्कोमा. ठीक है. कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बस फैट बढ़ा हुआ दिख रहा है. क्या बोलेंगे हम इसे? इविंग्स सार्कोमा. ठीक है. ऑनियन पील अपेयरेंस. ओके. ब्लैक कलर with white dots. Okay, take a look over here. लड़कियों को पता होगा, दिस इज कॉल्ड एज पोल्का डॉट अपीयरेंस. क्या बोलते हैं इसे? पोल्का डॉट अपीयरेंस. एंड इट इज सीन इन whom? It is seen in hemangioma.
के हेमेंजियोमा। ओके, ये क्रॉस सेक्शन पे था। इफ वी विल पुट इट इन वर्टिकल, ओके, इफ वी विल पुट इट इन वर्टिकल, अब बेबी को अगर पोल्का डॉट शर्ट नहीं दिया, सो व्हाट विल हैपन विद द गाय? ही विल गो बिहाइंड द बार, राइट? ही विल गो बिहाइंड द बार, है ना, जेल के अंदर जाएगा। इसी को बोलते हैं जेल बार अपीयरेंस। इट इज ऑल्सो सीन इन हेमेंजियोमा ओनली। ठीक है, नाउ कम्स मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूमर। इपिफाइसिस में कौन से ट्यूमर होते हैं? दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एंड जाइल सेल ट्यूमर। You can remember by the mnemonic ECG. Okay, most common site is epiphysis. Metaphysis, only one, osteosarcoma. Okay, we have something called as medical officer, right? We have medical officer, right? एक टेस्ट करते हैं in ENT. The name of test is auto acoustic emission. Diaphysis is the most common site. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, बाद में भूल जाओ। Most common tumor of the bone. What do you think? What do you think? No, all are wrong. Most common tumor of the bone is metastasis. There was no mention of primary tumor or benign tumor. They asked you most common tumor. The answer is metastasis. ठीक है, most common primary tumor of the bone is multiple myeloma. Multiple myeloma. Most common benign tumor of the bone. अब तुम्हारा आंसर है osteochondroma. Okay, याद रखना ये चीज, ठीक है? इसीलिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, और जो आता नहीं वो रॉन्ग होगा, दैट्स ओके। इजी वाला कभी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑर्थो। ठीक है, बोन टू बोन मेटास्टेसिस इज सीन इन, mnemonic is itself going to speak, osteosarcoma, neuroblastoma and Ewing sarcoma will have bone to bone metastasis. Okay, bone to bone metastasis. One image, two questions this time. Okay, one image, two questions from the given image. पहला आया था, ओके, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा आ चुका है, एंड वन वाज आई थिंक एनकॉन्ड्रोमा। देख लेना जो भी आया रिसेंट में। इफ यू आर सीइंग अ हैंड विथ मल्टीपल नोड्यूल्स, क्या बोल रहा हूं मैं? हैंड विथ मल्टीपल नोड्यूल्स, रिमेंबर आंसर इज एनकॉन्ड्रोमा। के कुछ नहीं आएगा हैंड पे तो याद रखना, यू शुड मार्क एनकॉन्ड्रोमा। ठीक है, क्या है? व्हाट इज दिस? फुट टेढ़ा हो गया, राइट? इसी को बोलते हैं हम कंजेनाइटस टैलेपस इक्वाइनोवायरस, CTEV. And which shoes is given in CTEV? The name is Danish brown shoes. And this is your question. It look like a skull
has a fracture like raindrops. यहाँ पर भी ड्रॉप्स ड्रॉप्स दिख रहे. Okay, this is called as a raindrop skull. Yes, raindrop skull is seen in which disease? मल्टीपल माइलोमा. ठीक है, कौन से लीजन बोलते हैं इसको? द लीजन नेम इज ऑस्टियोलाइटिक लीजन. पेशेंट विल प्रेजेंट विथ रिकरेंट फ्रैक्चर्स. मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट किसके साथ आएगा? रिकरेंट फ्रैक्चर. रीजन? सब जगह तो होल है उसके, सो देयर विल बी फ्रैक्चर्स, राइट. लीजन का नाम क्या है? ऑस्टियोलाइटिक लीजन. ऐसे लग रहा है someone has took a हथौड़ा and he has beaten, है ना. if you will take a metal plate and if you will beat it, ऐसा लगेगा कि बहुत जगह पे से आड़े टेढ़े सब तरह के गड्ढे बनेंगे. दिस इज कॉल्ड एज कॉपर बीटन स्कल. ठीक, हथौड़े से मारा ऐसा लग रहा है. सो दिस इज सीन इन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन. कब मिलेगा ये? इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल टेंशन, ICT. ओके, अर्थ अर्थ with so many countries, right? और एशिया, यूरोप, अफ्रीका दिख रही है अर्थ जैसे. दिस इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक स्कल. Geographic skull is seen in which? It is seen in eosinophilic granuloma. Eosinophilic granuloma. We have discussed this. Crew cut or military cut, है ना. और hair on end appearance is seen in, right, hereditary spherocytosis, iron deficiency anemia, neuroblastoma, G6PD deficiency, sickle cell anemia, और तुम्हारा फेवरेट थैलासीमिया, राइट. क्रू कट और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इज सीन, राइट. इफ यू विल मिक्स साल्ट प्लस पेपर, पेपर मतलब काली मिर्च, राइट. सो व्हाट इट विल लुक? ब्लैक व्हाइट मिक्स दिखेगा, राइट. एंड टेक अ लुक ओवर हियर, है ना. ब्लैक व्हाइट मिक्स दिख रहा है, इसी को बोलते हैं साल्ट एंड पेपर स्कल. क्या बोलेगा हम इसे? Seen in hyperparathyroidism. Okay, hyperparathyroidism. It look like a wool, that is called as cotton wool. Seen in Paget's disease. ठीक है, seen in Paget's disease. What is this? कार्टून आता था बचपन में, right? He used to eat spinach. Okay, he used to eat spinach और उसके बाद उसके मसल बनते थे. Yes, this is called as Popeye. Popeye's sign seen in which muscle injury? That is bicep. Yes. It is seen in biceps tendon rupture. ठीक है. With this, we will end the session. Most of the 90% of the ortho is covered. ठीक है, 90% of the ortho is covered. थोड़े बहुत इधर उधर पॉइंट छूटे होंगे, that I agree, but main topics has been covered. Okay, those who haven't studied, you can study from this as well. Enough है ortho के लिए. Okay, go and check the reports. 90% of the question is from this PDF only. Okay, with this I will end the session. See you soon. Good night. Good night all.